ये इनकी यानी पेस्टिसाइड स्टडी करने की लेबॉर्ट्री है। यहाँ हमको दिखाता हूँ मैं, वैसे एनालिटिकल लेबॉर्ट्री है, तो यहाँ पे अंदर नहीं लेके जा सकते, तो ये डिफरेंट यहाँ से पेस्टिसाइड डिटरमिन कर रहे हैं। मैं अभी उनसे पूछता हूँ कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे GCMS नहीं यूज़ कर रहे, बोलते ये कि थाईलैंड के किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, तो ये मैंने पूछा इनसे ना, तो ये लेस दैन $3,000 की है, बल्कि 3,000 भी वर्थ की है। तो कहते हैं इंपोर्ट भी कर सकते हैं पाकिस्तान आप ना, थाईलैंड से। तो ये डिफरेंट प्रोसीजर है इसका किट का ना, ये आप देख सकते हैं। तो ये टेस्ट किए मैंने, ये प्रोसीजर लिखा हुआ सारा देख सकते हैं। ये प्रोसीजर है, सैंपल प्रिपरेशन है, उनका सैंपल है, उसके बाद एडिंग सॉल्वेंट, then adding the solvent and laying on the solvent. This one 7 ये टेस्ट हो रहा है किट के जरिए। सो रीडिंग द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट, रीडिंग बाय आई। सो ये मेथड है, यानी प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग पेस्टिसाइड रेसिड्यू इन रॉयल प्रोजेक्ट फाउंडेशन प्रोडक्ट्स बाय GT पेस्टिसाइड टेस्ट किट। जज़ाकल्लाह प्लीज। To test for the chemical residue, pesticide residue. She is going to be the head of this laboratory, and she did a lot of sampling every day, you know. So they gonna some people to go to sampling after harvest and send the samples here. So actually 1 kilogram of each kind of 1 kilogram. 1 kilogram need for sampling, but for some higher price product they may not reach, maybe half, something like that. After sampling and then send the samples here, she's gonna blend, chop and blend, so to get the samples before go to the testing. Okay. And for the testing step, here you can follow step 1 until 8. So after chop and blends, they're gonna weigh exactly amount of the samples and then add with some chemicals, because here they use the GT test kit. It's a rapid method to tell us present or absent of the pesticide in the acceptable safety levels or not. No? After you get the extract solutions and you make them have the reaction with chemicals, and the results can be interpreted like three levels. Now if you get 0, it means that no pesticide contaminated in the products, but if you get the score but below than 3, it means that there's some residue present in your product but still be in the acceptable levels. But if the results you get more than 3 score, it means that you must reject that lot because it found contamination in the not acceptable levels. And here, actually here just only report as present or absent, so they need to send the samples twice a month to the central to quantify. to detect how much. Okay, thank you. 谢谢 So you have to อาจารย์ select สา the มารถ test เอา kit. ไปในแปลงได้เลยนะคะนี่มันง่ายมากเช็ดเฉย ค่ะ you just like the portable laboratory, no? You just bring this ये solution मैंने दिखाया, ये and से goes attack into कर सकते हैं पेस्टिसाइड the ग्रुप साइज farm area and then just swap. ๆคีย์วายนะคะมีกลิ่นแรงหน่อยเวลาใช้ต้องใส่ปิด So this one just for another chemical, pyritol group chemical. So you must know what is the possible residue อันนี้เยอะมาก that found
what you are looking. Yeah. Highly tolerant. ये डिफरेंट यानी इनके जो ग्रुप हो सकते हैं पेस्टिसाइड्स के डिटरमिन, तो ये हम कर सकते हैं इससे ना। ये इनकी लैब है पेस्टिसाइड्स की। But just only the group of the chemicals. And